have remained undisclosed. Sir, the suspected reasons behind the disappearance of these women are diverse, like trafficking, trade, and in minuscule cases, elopement. Tackling this issue requires collective action on various fronts, strengthening law enforcement to identify trafficking networks, enhancing border control, establishing a database for accurate identification of the reasons for the disappearances. Additionally, the numbers have come as a surprise to many, indicating the lack of awareness of the incidents of disappearance of women. Therefore, public awareness campaigns, community involvement, educational programs can help prevent vulnerable individuals from falling prey to traffickers. Despite designated stop centers, the unprecedented increase in numbers suggests the possibility of organized criminal activities, sir. A recommendation to address the issue of missing women involves the establishment and maintenance of a comprehensive register by the government documenting details of every woman reported missing. This register should serve as a centralized database, enabling efficiency tracking and tracing efforts. Sir, additionally, specialized teams should be formed to investigate each case effectiveness. Sir, this issue is of grave concern. How can women go missing like this? Just without any reason, women missing is a grave issue. Sir, the government must pay attention to this. Shri Rajiv Shukla, concern over poor state of under trials and the imperative for judicial reforms. Not present. Shri Kailash Soni, demand to add biography of Shri Jayaprakash Narayan in academic syllabus. आपके माध्यम से मैं सरकार के समक्ष एक देश के महत्वपूर्ण मुद्दे को रखना चाहता हूं। इस देश के मूर्धन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सर्वोदयी नेता, दुनिया की सभी देशों की समाज व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक विचारों को नज़दीक से देखने वाले, पाश्चात्य जगत के लोगों को, विशेषकर श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष करने वाले आया है। मुझे लगता है ये इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, क्वेश्चन, ये बिगेस्ट बैंक का स्कैम उसमें नजर आ रहा है। संजय जी, आस्क योर पॉइंटेड क्वेश्चन। सर, ये जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, मेरी जानकारी से जब कोई ग्राहक 10-15 साल के लिए पॉलिसी साइन करता है तो प्रीमियम के लिए सहमति भी देता है, जो उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। अधिकांश ग्राहक 2 से 3 वर्षों में के बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के पास बहुत सारा अनक्लेम फंड पड़ा हुआ है। और बैंक दावा करता है कि ये जो आकस्मिक बीमा कवरेज है, जो बैंकों द्वारा चार्ज की गई प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा खातों धारकों की सामाजिक सुरक्षा पर खर्च की जाती है। संजय जी, प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, गत 3 वर्षों में दुर्घटना बीमा क्लेम के रूप में कितने परिवारों को आपने ये राशि वितरित की है? ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, सभागृह के ज्येष्ठ सदस्य संजय जी राउत, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है। सरकार के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण स्कीम्स है जो गरीब लोगों के लिए और अनप्रिविलेज लोगों के लिए चलती है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो और पेंशन योजना जो अटल पेंशन योजना है। इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं
कि जो लास्ट 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में जो कलेक्शन हो चुका है या इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं अभी तक के क्यूमुलेटिव अगर इफेक्ट देखें तो 18 करोड़ 50 लाख 71 हज़ार इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है जिन्होंने विथ मैंडेट इंश्योरेंस का रहा है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 41 करोड़ 59 लाख लोगों को फायदा क्यूमुलेटिव हो चुका है। अगर उसका अगर देखें ये दोनों स्कीम के माध्यम से अगर जनता को जो फ़ायदा मिल चुका है वो 7,46,675 यानी क्यूमुलेटिव मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट भी 14 करोड़ 32 लाख से 274 मिला है। तो ऐसी ये दो स्कीम्स जो प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है उनके लिए वैसा कोई ये नहीं है कि जो बैंकिंग के पास ज़्यादा ये है। पहले 3 साल में तो ये स्कीम लॉस में चल रही थी और बाद में रिव्यू करके इसी को अभी जो प्रीमियम 12 रुपीज़ था वो 20 रुपये किया है और जो जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये था अभी 436 रुपये किया है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संजय राउत। प्रश्न अलग था, आपने जवाब अलग दिया है। मैंने ये पूछा था कि विदाउट कंसेंट आप बैंक अकाउंट से प्रीमियम आप जमा कर रहे हो, ये मेरा सवाल था, लेकिन मैं आगे पूछता हूँ। हाँ दीजिए। सेकंड सप्लीमेंट्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना है और सरकार उसमें मुआवजा देती है, लेकिन एक्सीडेंट में व्यक्ति के हाथ पांव आँख या ऑर्गन डैमेज होने पर आप मुआवजा देते हैं या उनकी मौत होनी चाहिए मृत्यु के बाद ही देते हैं, क्लियर नहीं है। एक्सीडेंट बीमा योजना के बारे में पूछ रहा हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ये एक्सीडेंट योजना में क्लियर है जिसमें अगर डेथ हो गया इट इज़ एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंट का डेफिनेशन भी दिया है गवर्नमेंट के माध्यम से। एक्सेप्ट सुसाइड all deaths are considered as an accident death except suicide and except illness means accident होना चाहिए। there should be hit from the outside, that is accident। तो अगर सुसाइड किया तो वो एक्सीडेंट नहीं माना जाता। इवन आई एम सेइंग मर्डर भी किया तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट और उसको इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। अगर इसी में 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, अगर उनको इरिकवरेबल 2 आईज चले गए दैट इज अ परमानेंट डैमेज टू द आईज देन 1 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर दोनों हाथ चले गए तो उनको 1 लाख मिल सकता है इंश्योरेंस और दोनों पाँव चले गए तो उनको 1 लाख इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक आँख चली गई और एक हाथ चला गया, स्टिल ही विल गेट इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़। कभी कभी एक हाथ और एक पाँव चला गया, कटा गया, तो भी उनको इंश्योरेंस 1 लाख का मिलता है। लेकिन इसमें 2 ऑर्गन्स इज इसेंशियल इन दिस रूल। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री धनंजय महादिक। Thank you, Chairman, sir. I would like to know from the Minister through you, sir, what is the nature of the scheme of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? Thank you, sir. Honorable Minister. सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसा मैं पहले ही बताया कि ये पुअर लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन के लिए और जो अंडर प्रिविलेज है लोगों के लिए है। इस स्कीम में ओनली 20 रुपये का प्रीमियम 1 साल से दिया जाता है और इसमें भी समझो 1 जून से योजना चलती है, 1 जून से 31 मई तक। अगर किसी ने ये योजना में जैसा 3 महीने के बाद किया तो उसको 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी उनको इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मैंने जैसे बताया देयर शुड बी अ परमानेंट डैमेज ऑफ द ऑर्गन। अगर ऑर्गन हो गया तो उसमें आईज हो, हैंड्स हो, फुट हो तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो भी 2 लाख उनके जिसके ऊपर नॉमिनी है उनको ये मदद मिल सकती है। और अगर मैं बताना चाहता हूं तो अभी तक इस योजना के माध्यम से 2,115 करोड़ का राशि डिस्टर्बर्स हो चुकी है। 2,502 करोड़ की राशि यानी लोगों को मदद मिल चुकी है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलाता देव। थैंक यू चेयरमैन सर, मुझे सप्लीमेंट्री में बोलने के लिए मौका देने के लिए। मैं
आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि कितना लेना चाहिए, मुझे वही जानना है। थैंक यू सो मच सर। माननीय सभापति महोदय, इंश्योरेंस के बारे में जो पहला क्वेश्चन है, लोम्बार्ड इंश्योरेंस है, बजाज इंश्योरेंस है, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस है, रिलायंस इंश्योरेंस है, टाटा एआईजी इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हेल्थ के बारे में क्या है। मैं एक डॉक्टर हूं और बताना चाहता हूं सर कि सबसे ज़्यादा और सबसे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होगा तो आयुष्मान भारत कार्ड है। उसके साथ इसके साथ मैं बताना चाहता हूं जो जीवन ज्योति बीमा योजना है अलग। For giving me this opportunity, I have a very serious and relevant question to the Honorable Minister of Finance regarding these particular two schemes. Both the schemes, the banks act as enrolling agents. The policy is issued by the insurance companies, but the entire premium is paid by the client. Now the consent is taken of the client, but complaints are galore on social media as well as complaint forums that they are not aware whether they are insured or not. So where should they claim? So whether the Honorable Minister will initiate some kind of a data collection inquiry from IRDAI, the Insurance Regulatory Authority, and the Department of Financial Services, whether these banks' audited accounts are reflecting these amounts of who are these persons who need this insurance, and whether with which company they have a tie-up. Does the client Minister. know? Sir, it is a very serious issue. The complaint is galore, and I would like the Honorable Minister to give me a reply or tell me whether there is going to be a proper inquiry of this data collection. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभागृह का बताना चाहता हूं, ये जो इंश्योरेंस है जो जिसमें मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस स्कीम में इंश्योरेंस का कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। लेकिन जब कभी जो मैंडेट के माध्यम से 20 रुपये या 436 रुपये उनसे अकाउंट से लिया जाते हैं, फॉर्म भरे जाता है, उसका स्लिप दिया जाता है और उसी को ही इंश्योरेंस बोल के किया जाता है। और जैसा माननीय मैडम ने पूछा है कि इसके बाद जैसा बैंक इज कलेक्टिंग मनी बट इट इज़ गिवन टू द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ बैंक टाइप होती है और कस्टमर को पता दिया जाता है कि ये कस्टमर ये बैंक है क्या, बैंक को लगाया जाता है कि ये बैंक में ही लगाया जाता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी से टाइप है, इसके साथ ही होता है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ अकोमोडेशंस, जैसा मैं बताया कि जो अगर क्लेम करना है तो बैंक में भी ओम्बड्समैन रहते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जैसा इरडाई की बात की, इरडाई के माध्यम से भी ओम्बड्समैन रहते हैं और उसके माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ कंप्लेन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, श्री प्रमोद तिवारी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, श्री प्रमोद तिवारी। मैं आभारी हूँ आपका, ये एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रश्न पर आपने मुझे मौका दिया है। योजना का प्रचार प्रसार तो बहुत है, पर जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं सरकार ने वो नगण्य। माननीय मंत्री जी के जवाब देख रहा था मैं, 1 दिसंबर 2023 तक 2,50,00,000 रुपए इस पर खर्च हुआ है। इसमें कितना विज्ञापन में गया होगा ये समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, बहुत ही पॉइंटेड सवाल है मेरा, कि देश की आवश्यकता के अनुसार कितने डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए और इस समय देश में कितने उपलब्ध हैं। इस अंतर को पाटने के लिए क्या कोई स्कीम, कोई व्यापक प्रयास, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि देश की हेल्थ सिस्टम कैसे मजबूत हो। तो हमारी दोनों मॉडर्न मेडिसिन और आयुष
सिस्टम दोनों बहुत ही अच्छी तरह से काम करे। और वैसे एक क्वेश्चन आयुष से रिलेटेड है, और ये आयुष मिनिस्ट्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ही बनाई है और खुद ने सजावट की है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत के बारे में है। तो उसमें कुल अभी तक आयुष मेडिकल कॉलेज 2014 में 523 थी, वो 2022 में 780, और ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट सीट्स भी 74% की बढ़ोतरी है। तो 23,974 सीट्स की बढ़ोतरी है। ऐसे पीजी सीट से वो भी 2102 की बढ़ोतरी 41% रही थी। और ये आयुष्मान भारत सेंटर में हर सेंटर में एक डॉक्टर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। और ऐसे ही खुद प्रधानमंत्री ने तो ये आयुष्मान भारत का जो हॉस्पिटल था, उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया है। और आज ये सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से काम करे, और हर देश में अभी आयुष और मॉडर्न मेडिसिन के दोनों के डॉक्टर बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारा जो गुणोत्तर होता है उसके आसपास ही काम कर रहे हैं। और कम से कम आज आपको हम बताएं तो कुल ड्यूरिंग हमारी आज का ये क्वेश्चन के अनुरूप फाइनेंशियल 2021-22 में 100 आयुष डॉक्टर्स और 36 अदर पर्सन, वो 2 स्टेट में हमने एजुकेट आयुष इसके बारे में ये ट्रेनिंग दिया है। 1564 आयुष टीचर्स 10 स्टेट के, 421 आयुष डॉक्टर 6 स्टेट के, 22 आयुष पैरामेडिक्स इन 1 स्टेट एंड 327 अदर पर्सन इन 7 स्टेट। हमने ये आयुर्ज्ञान स्कीम के अंडर ट्रेनिंग दी। इसके अलावा ईयर 2023-24 में ये लास्ट 8 मंथ में 527 आयुष टीचर्स 7 स्टेट के, 186 आयुष डॉक्टर्स इन 3 स्टेट्स, 30 आयुष पैरामेडिक्स इन 1 स्टेट एंड 117 अदर पर्सनल जो 3 स्टेट के हमने CME कंपोनेंट और इसकी आयुर्ज्ञान स्कीम के अंडर ट्रीट किए। ऐसे ही हमारी दूसरी भी हमारी जो हमारी जयपुर की NI है, इसके द्वारा ITR और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा भी स्टूडेंट्स को हम टीच करते हैं। तो ऐसे सब डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो हमारे हैं उसको आज बहुत ही अच्छी तरह से काम करें। थैंक यू सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री प्रमोद तिवारी। सर, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा का मैं समर्थक हूँ और चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास प्रचार हो। पर मैंने सवाल सिर्फ सीधा सा पूछा था, कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, फार्मासिस्ट की और जो पैरा स्टाफ, और उसके अनुपात में कहाँ आया सर? नहीं आया। प्रश्न पूछिए। दोबारा मैं चाहूँगा अगर जवाब दे तो अच्छा है, पर एक सवाल मेरा और सुझाव भी है। सवाल के रूप में मैं पूछ रहा हूँ। सुझाव पहले दीजिए और सवाल बाद में पूछिए। ठीक है सर, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें दावा है कि सबको कवर किया जाएगा। अगर माननीय मंत्री जी कोई जानकारी है तो ये बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग शामिल नहीं है, तो क्या इसको शामिल कराने का कोई इरादा है? अगर है तो मैं स्वागत करूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, आज हमारी सदन की एक बड़ी सदस्य ने जो सवाल की है बड़े रेलिवेंट है। स्वास्थ्य सेक्टर में आज एक एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 9.5 साल की कार्यकाल में उन्होंने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, देशवासियों ने, दुनिया ने इसको देखी है और महसूस भी की है।
और उसमें से सबको सेवा भी मिली है, सबको मुझे लगता है कि काफ़ी अपने शारीरिक समस्या से राहत भी मिली है। तो इसलिए माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो सवाल की है, हमारे ये जो सेंट्रल सेक्टर आयुर्विज्ञान के जरिए जो भी हमारे डॉक्टर्स है, जो टीचर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नॉन आयुष साइंटिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, सबको उनकी मतलब एम्पावरमेंट के सिलसिले में, आप स्किल के सिलसिले में उनकी क्षमता बढ़ाया जाए, उनकी इसके लिए उनको अधिक काबिलियत बनाने के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में वो व्यवस्था रखा गया है। तो आपका सवाल है कि आज ये जो आपने कहा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमें ये निर्देश दी है कि दोनों सिस्टम को एक साथ आप आगे बढ़ाइए। दोनों सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो निर्देश दी थी, उसी निर्देश को हम निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पिछली 2 साल एक साथ हम लोग काम किया है। और आज एम्स से लेकर अप टू द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक, सब सेंटर तक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर सेंटर में दोनों सिस्टम उपलब्ध हो, इसके लिए जो भी निर्देश दी है उसको हम लोगों ने उसको सही लागू करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और हम लोग कर रहा है। तो इसलिए आपका जो सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि दोनों मिनिस्ट्री का लक्ष्य एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। अगर एक ही लक्ष्य है, एक साथ क्यों नहीं काम करें? तो इसलिए एक होलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने के सिलसिले में जो भी आज सारे प्लानिंग की गई है, जिसको लागू की गई है, मुझे लगता है कि देशवासियों के लिए हो या दुनिया के लिए हो, ये बहुत बड़े एक उदाहरण है और ये निश्चित रूप से होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बड़ा काम में आए। थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर अनिल जैन जी सर। थर्ड सप्लीमेंट्री। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर देश में ही नहीं दुनिया में आयुष का फैलाव हुआ है और आयुष के प्रति दुनिया के लोगों की श्रद्धा बढ़ी है और दुनिया के लोग आयुष के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। और मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं। कोरोना के समय पे भी मैं मॉडर्न मेडिसिन से आता हूं, मैंने मॉडर्न मेडिसिन के पूरे देश भर के डॉक्टर्स की भी बातचीत की। उसके साथ साथ आयुष के लोगों ने कोरोना के समय पर जो योगदान दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर, वो सारी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया है। मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दुनिया में आयुष के प्रति जो लगाव हुआ है और इस प्रकार आयुष के माध्यम से दुनिया के लोग भारत में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ऐसे आयुष वीज़ा के लिए हमारे कितने लोगों को वर्तमान में ये वीज़ा दिया जा रहा है? आगे आने वाले समय में आयुष वीज़ा कितने लोगों को और दिया जाएगा? सरकार की इसके बारे में क्या नीति है? और आने वाले 5 साल में आयुष को प्रमोट करने के लिए और दुनिया में आयुष के फैलाव के लिए और वीज़ा बढ़ाया जा सकता है और फैसिलिटीज बढ़ाई जा सकती हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी हमको अवगत कराने की कृपा करें। ऑनरेबल मिनिस्टर जी, हमारे आदरणीय अनिल जैन जी ने जो भी सवाल की है, इस सवाल का जवाब यही है कि अब हेल्थ हिल इन इंडिया, मेडिकल ट्रैवल टूरिज्म और दुनिया की ये हब बने चिकित्सा के सिलसिले में। तो इसलिए दुनिया के अलग अलग प्रांतों से जो भी हमारे आयुर्वेदा चिकित्सा के लिए, आयुष की चिकित्सा के लिए जो भी आना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए एक अलग सा कैटेगरी वीजा नोटिफाइड की गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले दिनों में आज जो व्यवस्था खड़ा हुई है, आप देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता बिहार में जो है, सिर्फ 6 साल के अंदर फुटफॉल 17.5 लाख हो चुका है, 17.5 लाख। और
WHO का डायरेक्टर जनरल ने भी एक बड़े डेलीगेशन लेकर उन्होंने भी विजिट किया है और बड़े प्रशंसा की है। साथ साथ में कुछ दिन पहले 12 अफ्रीकन कंट्री की उनके हेड ऑफ द नेशन के डायरेक्शन को वो मानते हुए 12 एम्बेसडर ने भी खुद आया और हमारा व्यवस्था को देखा। तो इसलिए साफ यही है कि हिंदुस्तान में जो भी अभी हॉस्पिटल नेटवर्क बने हैं और साथ साथ में हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे टीचर्स हो, हमारा साइंटिस्ट हो, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी स्टाफ को जिस हिसाब से शक्ति दी गई है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, दुनिया को साथ लेकर दुनिया को स्वास्थ्य सेक्टर में एक बड़े सेवा देने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, इसलिए उन्होंने ये बात, देखिए आप लोग सुन तो लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ की हेडक्वार्टर की जो भी प्रीमिसेस में जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट की है, जिसका नेतृत्व उन्होंने दी है, और 135 देशों का डेलीगेट ने उस कार्यक्रम में भाग लेकर दुनिया को यह साबित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य सेक्टर में जो भी उन्होंने उपाय दी है, इस उपाय सही है और ये वैज्ञानिक है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे अनिल जैन साहब ने जो भी सवाल की है, इस सवाल का जवाब यही है, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात G20 में रखी है, one earth, one family, one future. So that's that one, it is for one health. So Vasudeva Kutumbakam, इतने बड़े उन्होंने बात रखी जिसके जरिए आज दुनिया को भी ये बात मानने के लिए सब कोई सहमत है। तो मुझे लगता है कि हमारे अगले दिनों में इस सेक्टर में ऐसे ही दुनिया का आकर्षण बढ़ाने में हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़े प्रतिबद्ध होकर काम करते रहेंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर वी शिवदासन। Respected Chair, Kerala is known as a land of Ayurveda. I think everybody knows that. From different parts of the world, the people are visited there for the treatment. So, Chairman also participated in the programs there. So, what I am asking to the Minister, there a lot of noted institutions are there, like Kottakkal Institute, Arya Vaidyashala, Thiruvananthapuram Institute, Kannur Medical Colleges are there. But a national level important institute on Ayurveda, because the proper study, research and scientific promotion of the Ayurveda is very necessary. So what kind of initiative from the union government is there? Then what is the plan of the union government to promote the Ayurveda institutes in Kerala? So government have any plan for the national level Honorable Minister. Institute, Ayurveda Institute in Kerala? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य ने सवाल की है, इसके जवाब में इतना ही कहूँगा कि हम हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर प्रांत को हमारे आयुष सिस्टम से जोड़ने के लिए हमने जो भी कदम उठाए हैं, इसमें केरला भी है। केरला अपना खुद का पहचान भी है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में केरला ने बहुत बड़ा योगदान दी है और इसलिए अगले दिनों में निश्चित रूप से हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के मुताबिक अगर प्रपोजल वो दे तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम विचार करेंगे। Fifth supplementary, Madam Koinak. I'd like to ask the Honorable Minister, under capacity building and continuing medical education component of Ayurgyan scheme, does the ministry have plans to train Ayush doctors and other personnels in the rest of the states not yet covered in the country, and especially northeastern states of Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura? Thank you. Honorable Minister. मैं
मैडम को धन्यवाद देता हूं, माननीय सभापति जी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से है और मैं भी नॉर्थ ईस्ट से हूं। और सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट को विकास की रास्ते पर तेज से चलने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दी है, बहुत बड़ा मेहनत की है। I was also there in North East for 3 years. Thank you, sir. So that is a priority sector for our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has given everything for the speedy growth of North East. That's why I, being a North-sterner, I am especially grateful to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And in this regard, so far 33 integrated Ayush hospitals were approved, and 9 are functional, and 33 integrated Ayush hospitals are already under different stages of implementation, and more than 850 numbers of health and wellness centers are being improved. So I believe that's the way we are trying to make Northeast very much sensitive in this regard in the sector of education, research and training, as well as for hospital better facility. Thank you. Question number 18, Shri Neeraj Dangi. Question number 18. Honorable Minister. Supplementary 1, Shri Neeraj Dangi. माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद है। क्या हो गया माइक? सर माइक सर। सर मेरे प्राथमिक प्रश्न का जो 4th भाग है उसका आंसर प्रॉपर नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरा प्रॉपर आंसर आना चाहिए था। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या वित्त मंत्री जी उन विशिष्ट उपायों या प्रयासों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जिनकी योजना सरकार बना रही है, या इसके अतिरिक्त डिफॉल्टरों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए लागू की गई है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय और माननीय सदस्यगण, अलग अलग स्कीम के माध्यम से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से अलग अलग सिटीजन्स को जिनको ज़रूरत है उनको लोन देने की स्कीम्स है, जिसके माध्यम से वो व्यवसाय करें और व्यवसाय के बाद उनका इनकम बढ़े। जिसमें मैं बताना चाहता हूँ, मुद्रा लोन स्कीम है। मुद्रा लोन के माध्यम से अलग अलग स्कीम्स है, और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनके इनकम के लिए है, और जो इनकम बढ़ाने के लिए जो आप दिया है, जैसा आरबीआई गवर्नर के आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस है, जिसके एनपीए जो है, जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उनको भी कुछ लोन देना नहीं चाहिए। उसके बाद देयर इज सम यूनिट्स विच आर डिबार्ड फॉर गिविंग द लोन्स फॉर द विलफुल डिफॉल्टर्स, उनको भी लोन देना नहीं चाहिए। इसके बाद इन सरकार के माध्यम से 2018 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया था। वो कोड के माध्यम से अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट ऑफिस के केस हो सकती है। सम फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 2018 में एक्ट लाया है, जो जिनके माध्यम से बड़े अकाउंट एनपीए हुए और जो इंडिया में रहते नहीं, उनके ऊपर भी केसेस हो रही है और उनका ये हो रहा है। इसके बाद लुकआउट सर्कुलर भी दिया जाता है बैंक के माध्यम से, जिन्होंने लोन का बराबर रिटर्न नहीं किया है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो लोन्स रिटर्न नहीं करते उनके फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एक क्रिसिलियस माध्यम से सर्कुलर जाता है, जिन्होंने ज़्यादा लोन लिया है उनका सभी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो एक तो जो एनपीए अकाउंट कम होना चाहिए, बैंकों की वसूली अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके साथ कुछ इनकम और कुछ इनकम जनरेटिंग स्कीम्स भी है जो मैं बताना चाहता हूँ। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नीरज डांगी। सर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री ऋण लेने वाले गारंटर्स को लेकर के है, जो गारंटी देते हैं। वित्त मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऋण न चुकाने के मामलों में गारंटरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कोई विधायी या नियामक परिवर्तन विचाराधीन है? यदि हाँ
तो उसकी डिटेल्स, उसका ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय और माननीय सभागृह, मैं आपसे वो बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभागृह को बताना चाहता हूँ कि जो बारोअर है उतना ही इम्पोर्टेंट गारंटर है। अगर गारंटर के उन्होंने साइन किया होगा, बैंक के पेपर साइन किया होगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इक्वल लायबिलिटी देने का और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जैसे माध्यम से जो अलग अलग कार्रवाई जो की जाती है, बैंक के माध्यम से उनके ऊपर सिविल सूट या डीआरटी कोर्ट में केस हो जाती है। उसके बाद सरफेसी एक्ट 2002 के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 16 के माध्यम से भी कार्रवाई हो जाती है और ये इन सभी चीज़ों से उनके ऊपर गारंटर के अलग ना सोचते हुए उनके माध्यम से कार्रवाई हो जाती है। और बैंक, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है लास्ट मंथ, अगर गारंटर ने पैसे साइन किया है तो ही इज़ आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, तो गारंटर को कोई सुविधा नहीं मिल सकती। गारंटर इज आल्सो इक्वलेबल एज अ कस्टमर। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्री बिनोय विश्वम। You, sir. Sir, there is a magic word by the government, which is called haircuts. And the government claimed that with that magic, the willful defaulters are handled, and the NBS are settled, and the government has made wonders. Your supplementary. Can the government be kind enough to tell the House the amount of haircuts made by the banks and the government for the willful defaulters who are the corporate houses? Thank you, sir. Honorable Minister. It's not the government which suggests saying take this haircut or take that level of haircut. There is an established mechanism through which the Committee of Creditors decides on the basis of the proposals which are before them to see what is the best solution which can be offered. So first I would like to dispel the impression that the honorable members having and also probably putting before this House that the government decides on how much has to be the haircut. Not at all. There is an institutional bylaw mechanism which decides on how the creditors are going to be paid back. So I would like first of all that thought to be removed, and if that thought is removed, there is no further answer required according to me. Fourth supplementary, Shri Jawahar Sarkar. Sir, this question has been replied to in terms of receding amounts of bank loans, bank write-offs. Fair enough. The point that I want to ask is that are we making international comparisons? Because the IMF data released every 6 months shows that the average loan write-off, average bad loan, what we call GNPA to total loan, GNPA to gross NPA to total loan is around 1% to 1.5%. India went up to 11%. A humongous 11%. Forget the history. Your supplementary. My supplementary is government making comparisons with international norms to understand how good or how bad we are? Honorable Minister. प्रिय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चंस हमें राइटिंग में भी पूछा था और मैं बताना चाहता हूं, रिटर्न ऑफ लोन, राइट ऑफ लोन, या इट डजंट मीन वी आर गिविंग द वेविंग ऑफ द लोन. देयर इज अ डीप लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर बैंक ने राइट ऑफ लोन किया तो उसी का बैंक प्रोविजन करती है और जो कार्रवाई होना चाहिए, जैसे मैं पहले बताया, वो कार्रवाई पूरी तरह से जो अकाउंट जिनका एनपीए है, जिनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, जिसमें डीआरटी कोड से हो, इंसॉल्वेंसी आईबीसी कोड हो, या सभी कार्रवाई हो जाती है. अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि जिसमें जो एनपीए के बारे में भी उन्होंने सवाल पूछा था 11.4, अगर मैं बताना चाहता हूं तो 11.4 जो हुआ था एनपीए, दैट वाज इन 2018
2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आ गई और ये सरकार आने के बाद 4 साल बैंकों को प्रोविज़न करना पड़ा, इसीलिए। और उसके बाद ऐसा कोई भी फ़ोन बैंकिंग नहीं था, कुछ इंटरफेरेंस नहीं था बैंक में, इसीलिए 4 साल एनपीए बढ़ता गया। लेकिन अगर हम देखें तो एनपीए इतना कम हो गया है कि अराउंड 2% के आसपास है। एक मैं फिगर देना चाहता हूं, जिसमें अकाउंट अगर हम देखें एनपीए तो 2.06 करोड़ से 5.72 लाख इतना एनपीए कम हो गया है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि राइटअप और वेअप में फ़र्क है। नंबर 2, जो कुछ एनपीए हुआ था वो पहले इसमें हुआ था, और एनपीए का परसेंटेज भी मेरे पास मैं बताना चाहता हूं। 2022-23 में शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एनपीए 3.87% है, पब्लिक सेक्टर बैंक का 4.97% है और प्राइवेट सेक्टर बैंक का 2.29% है। ये ग्रॉस एनपीए है। अगर हम आफ्टर राइट ऑफ करने के बाद अगर ये नेट एनपीए अगर देखें तो 0.95, 1.24 और 0.055 इतना नेट एनपीए है। तो जो 2018 में जो माननीय सदस्य ने फिगर दिए 2018 की फिगर है, 2018 से 2022 तक कंटिन्यूसली एनपीए कम होते जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं सभी सभागृह को कि अभी बैंक का, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक का, अगर सितंबर टू सितंबर लास्ट ईयर का अगर हम लास्ट ईयर का तो 1,04,000 करोड़ का बैंक प्रॉफिट में, और दिस ईयर मीन्स सितंबर टू सितंबर आई एम सेइंग द प्रॉफिट इज अराउंड 1,32,000 crore. All banks are in profit. NPA is going down, and under the माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और बैंक अच्छी कर रहे हैं। 5th supplementary, Shri Jairam Ramesh. Sir. Honorable Minister. I just would seek your permission, sir, to say the question has not been answered. It's absolutely been answered. NPAs gross and NPAs net are coming down. And if the, let me finish. One second. Are coming down. And the numbers are before me. I'd like to read for those who think, no, we are hiding facts. No, I will read by year the net NPAs coming down. And Honorable Member Jawahar Sirkar's question about would you want to compare it with the West, I just want to give one line, sir. If NPAs are coming down in India, and steadily at that, at every year's number shows, which I'll read it out, and would the Honorable Member please carefully notice that banking distress, whether in Germany or in the US, and the banks which are going bust in the US, if that has not been kept in the back of the mind of the member, and he still would raise, would you do international comparison? This is the comparison which speaks for itself. So if you want me to name by country and then by India's banks comparison, it's hair-splitting. You are, as a senior member of the House, aware that even last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year about NPA coming down. Doesn't that indicate the health of the banks in both these countries? Not only NPA is coming down, profit margins going up of the banks. So, for the sake of the member who would want to persist on this question, I would seek his intelligence as much as yours, sir, in kindly listening to this number. Public sector banks, scheduled commercial banks, I would read both, first the scheduled commercial banks and the public sector banks subsequently. Net profit, net NPA ratio reduction. The high point was 2017-18, when scheduled commercial banks had a 5.94% of NPAs, and public sector banks had 7.97. Next year, it comes down to 3.65. Public sector banks comes down to 4.80. And subsequently, 2.81, 3.76, 2.39, 3.11, 1.67 to 2.19, and 22-23, sir, it's come down, the scheduled commercial banks net
NPA ratio as a percentage has come down to 0.95. And it has come down to 1.24 in public sector banks. Honorable Minister. Oh, sorry, sir. Oh, sorry, sir. They're drawing me to the temptation. Honorable Member Yagnik is a very senior member, a lawyer. She knows the technical terms, terminologies. From Eastern Write Ford. off and waive off. Come on. I hope the member of this house are not going to be tired of us repeatedly saying, what is a technical write-off, what is a waive-off? To go on asking this question. I'm not going to be tired to reply, but waive-off and write-off. Is this wanting a second reply? We've repeatedly said. I would urge Johar Sarkar, a very experienced senior member, to word his question directly, pinpointed. NPA, gross NPA to total load is a percentage that is internationally accepted. Year-by-year comparisons are given out, and it is 1 to 1.2% on an international average. India has not come anywhere across it in the last 8 years. Would the minister, who has read so much, who has been kind enough to intervene, give us a year-by-year comparison of the IMF standard or the IMF accepted international standard of gross NPA to total load? Okay, Mr. Sarkar, India's. Please, sir. I would, please. Honorable Minister, one second, please. Take it. Honorable Minister, may pardon my ignorance. Your minister used an expression, phone banking. What does that mean? Which one, sir? Phone banking. Phone banking. Thank you, sir. That would take me back. If you go in a little term, it's okay. Sir, thank you for giving me this opportunity. Phone banking was that time when in Indian banking, people would call the banks and say, so-and-so would come to seek a loan from your bank, please grant it. Meaning, don't have to look at his eligibility or his credit ratio. You must have to give him. So, actually, sir, today when this debate is being really hot enough to talk about gross NPA, IMF standard, measuring NPA versus the gross profit of the total loans issued, and so on, the heart of the problem was when, during the 10 years of the UPA's ruling, between 2004 and 14, phones were used to ask for delivery of loan to customers who were not worthy of being given a loan. The burden fell on us to sort the Indian banks out with reforms, identifying, first of all, the 4 R's that we talk about. Prime Minister Modi sat with all of us and sat with the entire, my predecessor spent a lot of time, Sri Jaitley spent a lot of time understanding where the problem was and working together with the Reserve Bank of India. So the phone banking was the method through which the political interference spoiled all our banks and drove them to loss-making situation. Today, if enthusiasm is shown on asking questions about NPAs, it is, first of all, look at the problem which contributed to NPAs and made Indian banks actually having a twin balance sheet problem. And the twin balance sheet problem made the Indian economy come down to being a fragile economy. That fragile economy today is the fastest growing and a rate of 7.6 in the last quarter. So please, kindly do recognize these things before questions on NPAs are asked. Shri Jairam Ramesh, the last supplementary. Sir, thank you for giving me the opportunity for asking a supplementary. Sir, yesterday, the Honorable Finance Minister answered a question in the Lok Sabha and said that there are 2,623 willful defaulters who owe the banks 1.96 lakh crores. Now, I would like to ask the Honorable Finance Minister, what extra and special steps are being taken to deal with willful defaulters? Because a willful defaulter, by definition, is a deliberate defaulter. He is full of will to default.
in the first place. So I would like to ask the Honorable Finance Minister, without getting into the history, 2,623 individuals own the bank's 1.96 lakh crores. Would she consider naming and shaming them Honorable so that Minister. there is pressure on these Honorable defaulters? Minister. Sir, action is being taken on willful defaulters. My answer in the Lok Sabha is actually indicative of banks taking steps towards getting the money back from these people. Action, again, I'll just highlight the cases because that will specifically answer a question raised by the Honorable Member. As of 31/3/2023, the legal suites for recovery were filed against 13,978 accounts. Action under SARFAESI have been initiated in 11,483 cases. FIRs have been filed in 5,674 cases. Aggregate amount of 33,801 crores have been recovered till 31/3/2023. The amount recovered is 33,000. Sir, therefore, the actions, and also there was a time, I think I've answered a Parliament question about cases taken up by the ED. Now, why do I bring that here specifically? The money is recovered and the money is returned to the banks themselves, subject to correction, because I'm just saying it out of my memory. More than about 13,000 crores have been given to the banks from these defaulters on whom PMLA cases have resulted in action through the Enforcement Directorate. So monies are being recovered through CBI cases, monies are being recovered through SARFAESI. So specific action through the various legal provisions are being taken, and as a result, monies are going back to the banks. Now, as on 1st December 2023, just a couple of days ago, assets amounting to 15,186.64 crores have been confiscated by the ED. I want this specifically on the record. 15,186.64 crores have been confiscated by the ED, out of which amounting to 15,183.77 crores have been restituted to the public sector banks. That amount where I said subject to correction 13,000, I stand corrected. The amount is more than 13,000. It is 15,183.77 crores which have been restituted to the banks. So the bank, the phone banking, NPA, what goes to the bank? This is the kind of constant action being taken by the CBI, ED, and the income tax and others, that money, both from the willful defaulters and from others who owe the Consolidated Fund of India, the money which has to go back through the banks or otherwise directly, are being put back. So this 15,183.77 crores is under the PMLA. Furthermore, sir, PMC Bank has recovered, I'm sure many from Maharashtra will be interested in knowing about this. PMC Bank has recovered 104.02 crores with active cooperation and support of ED. Assets amounting 692.89 crores have been confiscated under the provision of the FEOA 2018. So monies are constantly being recovered, not small amounts, huge amounts, which are going back to the public sector banks. Thank you, sir. Question number 19, Sri Mukul Balkrishan Vasnik. Honorable Minister. House. Sir, supplementary. Sri Amar Patnaik. So it's really laudable that we are on track as far as
achieving the non-renewable component in the energy consumption basket. So, but I have a worry, sir. There is a report which says that Orissa has a potential of 1.5 lakh megawatt of solar energy, much greater than the assessment made by government. In the reports, in the answers which you have been furnished by the department, this is projected at 465.23 megawatts. So if this potential is harnessed for every state, do we think that we can actually have much larger component of non-renewable sector in our energy consumption basket, in which case net zero actually becomes net positive for us. And we could actually be showing to the world that we are having a growth strategy which is much more greener than even what was anticipated world over. Honorable Minister. Mr. Chairman, sir, what the honourable member read out was the established solar capacity in Orissa, not the potential. So the potential is much more. What is happening, Honourable Chairman, sir, is that we set up capacity through open bids. And naturally, capacity is set up where, with preference to areas where the solar insolation is the highest or the wind speeds are the highest. So therefore, I mean, the solar insolation is not the highest in Odisha. The solar insolation is higher, much higher in Rajasthan or Andhra Pradesh, etc. So the preference by developers is given to these areas. And the whole country is connected by one grid. Therefore, it makes sense to harness solar potential in those areas first, where the insolation is higher so that the cost of power is less. And Mr. Chairman, sir, as the honourable member himself noted, actually we are not only doing satisfactorily, we are doing very well. In fact, what we did was that we had pledged that by 2030 we will have 40% of our capacity coming from non-fossil fuel sources. We achieved that in 2021, that's 9 years in advance. And today, our established capacity is about 186,000 megawatts, which is about 43% of our total established capacity. The target which we have said we'll achieve by 2030, that's 50% of our established capacity, we'll achieve before that. Because right now, apart from 186 gigawatts which has been installed, I have another 114 gigawatts which is under installation. Now, if you add all these, it comes to 300 gigawatts, 300,000 megawatts. And by 2030, my total established capacity would be in the region of about 780 gigawatts. So 50% of that is in the region of about, let's say, 373 gigawatts. So I just have to add about 80 gigawatts more. We'll achieve this target well in advance. Dr. C.M. Ramesh. Potential at a low level, then we will be only achieving that target. But if we actually, whatever figures have been mentioned here, wind energy, solar energy, hydropower energy, if our potential is even higher, then we should actually target to actually achieve that, in which case we will have much better potential to achieve a higher growth rate, and even our fossil component can become even more. Well, the Honourable Member can meet the Honourable Minister in his chamber. Dr. C.M. Ramesh. As per the Minister said rightly now, to achieve the goals, every year we had to do 30 gigawatts, solar I am telling about the solar. But doing the 30 gigawatts solar, now our manufacturing solar panels in India is not matching, not even 10 gigawatts. Some of the, whatever we are manufacturing, now in the USA there is a lot of demand. Now majority of the manufacturers, they are sending to the USA, and we are not importing because of BCD 30-40% tax. Now how to achieve this, Minister has to explain now. Honourable Minister. One, of course, is my friend Mr. Patnaik. Our ambition is not limited to achieving 50% of our capacity. In fact, our ambition is much higher. As the Prime Minister announced, by 2030, we'll have 500,000 megawatts of established capacity coming from non-fossil fuel sources. So actually, our ambition is much higher. Now, I already have 300 gigawatts, 300,000 megawatts established. I have to establish about 200 gigawatts to get to 500 gigawatts. So we've laid down a trajectory of bidding out 50,000 megawatts every year. So that will actually take us to about
we have 6 years left to 2030. Thank you, If I Honorable add 50 gigawatts every year, that will take me to 600 gigawatts. So I'll be ahead of that target as well. Now the problem is about the problem which my friend Ramesh mentioned The House was will about the meet. availability of solar cells and modules. The Honorable Member may interact with the Honorable Minister. Right. The House will meet again at 2 p.m. today.
Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sansad TV with your host Kriti Mishra. India's criminal justice system is set for a complete overhaul. The government has introduced 3 key bills to replace colonial era courts with the objective of speeding up trials by laying down specific timelines, boosting rates of conviction by improving the quality of evidence and providing relief and protection to victims. So what are the key provisions in the bill? What are the major recommendations of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Well, we've packed everything for you in this edition, so come along. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, and the Indian Evidence Act, and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In fact, Prime Minister of India also advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। In accordance with the basic principles enshrined in the Constitution of India, it was proposed to bring about fundamental comprehensive changes in the framework of Indian criminal laws. With this objective in view, the existing Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure 1973, and the Indian Evidence Act 1872 would now be repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshi Bill 2023 respectively. The Home Affairs Minister introduced these 3 key bills in the Lok Sabha on 11th of August 2023. ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा. The main problems in present legal system are very complex. There's huge pendency of cases in the courts. There's low conviction rate, and the amount of fine prescribed in the laws is very less, from 10 rupees to 500. There's overcrowding of under-trial prisoners in prisons. There's very little use of modern technology in the legal system. And there's delay in investigation, pending hearing process, and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. The new bills seek to historically address the problems in the criminal justice system to strengthen law and order, simplify legal procedure, provide speedy justice, and adapt the criminal justice system with the technological advancements. Further, all the outdated references have been deleted in the proposed bills. These bills seek to create a legal structure which is citizen-centric and to secure life and liberty of citizens and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 repeals the Indian Penal Code 1860. Key changes proposed in the bill include sedition. IPC defines sedition as bringing or attempting to bring hatred or contempt or exciting disaffection towards the government. It is punishable with imprisonment term between 3 years and life imprisonment and or a fine. The bill removes this offence. It instead penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging feelings of separatist activities,
or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, electronic communication or use of financial means. These will be punishable with imprisonment of up to 7 years or life imprisonment and a fine. Terrorism. The bill defines terrorism as an act that intends to threaten the unity, integrity and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. The bill also penalizes conspiring, organizing or assisting in preparation of any terrorist act within an imprisonment term between 5 years and life imprisonment and a fine of at least 5 lakh rupees. Petty organized crime. The bill makes attempting or committing petty organized crime punishable with imprisonment between 1 and 7 years and a fine. Death penalty for gang rape of minor. IPC allows death penalty for gang rape of women below 12 years of age. The bill now allows death penalty for gang rape of women below 18 years of age. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Code of Criminal Procedure 1973. The code provides for procedure for arrest, prosecution and bail for offences under various acts, including the Indian Penal Code of 1860. The highlights of this bill are trials in electronic mode. The bill provides that all trials, inquiries and proceedings may be held in electronic mode. It also provides for the production of electronic communication devices likely to contain digital evidence for investigation, inquiry or trial. Electronic communication includes communication through devices such as mobiles, computers or telephone. Forensic investigation. The bill mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Timelines for procedures. The bill prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Trial in absence of offender. The bill provides for conduct of trial and pronouncement of judgment in the absence of a proclaimed offender. This shall be done when such a person has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him. The Bharatiya Sakshi Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Indian Evidence Act of 1872. The Act provides rules for the admissibility of evidence in legal proceedings. The highlights of Bharatiya Sakshi Bill are admissibility of electronic or digital records as evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper records. It expands electronic records to include information stored in semiconductor memory or any communication devices like smartphones or laptops. Oral evidence. Under the Act, oral evidence includes statements made before courts by witness in relation to fact under inquiry. The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. Secondary evidence. The bill expands secondary evidence to include oral and written admissions and the testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया। The need to reform and rationalize the Code of Criminal Procedure, as also the need to undertake a comprehensive review of the criminal justice system of India, has been expressed from several quarters from time to time.
The Law Commission of India, in its various reports, has recommended several amendments in the criminal laws of the country. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar referred these 3 bills to the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 18th August 2023 for submitting its report within 3 months. The committee, during its deliberations, held a total of 12 meetings spanning more than 45 hours. 19 domain experts were called before the committee to present their views on the bills. The experts invited to participate in the deliberations included senior advocates practicing in the Supreme Court and various high courts, renowned university professors, retired judges, Chairman of Law Commission of India, retired Director General of Police, and besides, the representations received from private individuals and organizations and members of Parliament and ex-members of Parliament were also examined by the committee. Some of the major observations and recommendations of the committee include: the text of all 3 bills is in English language and hence the proposed legislations are not in violation of provisions of Article 348 of Constitution. The Sanhita has widened the scope of definition of gender by including transgenders. For the first time, community service has been introduced as a punishment in Sanhita for petty offences. The committee appreciates the government for introducing death penalty as a punishment for the offence of gang rape on a woman below 18 years of age, which was not provided in the IPC. The committee has recommended the government to seek the opinion of Attorney General and Solicitor General of the country with regard to Clause 1012, which is apparently about mob lynching. The committee appreciates the government for enhancing the punishment under Clause 104 on causing death by negligence from 2 years to 7 years. However, the committee has recommended reducing this punishment to 5 years as the proposed punishment of 7 years is unreasonably long. The committee commends the addition of Offence of Terrorist Act in the Sanhita. The committee compliments the government in deleting the term sedition from criminal law by rephrasing it without compromising the security of the state. The committee has recommended the government to include Section 377 of IPC in the Sanhita. A recommendation has also been made to retain Section 497 of IPC on adultery in the Sanhita by making it gender neutral. This is 75th year of our independence. Now, the salient features. The Bharatiya Nyaya Sanhita number of sections have been reduced from 511 to 356 and the chapters from 23 to 19. This is regarding Bharatiya Nyaya Sanhita, that is Old Indian Penal Code. We have used the word Nyaya, not a dand, not a penal, because this is a democracy. We are giving justice, not dand, not a penalty. 24 sections have been deleted from Old Indian Penal Code, 22 have been added, and a large number of sections have been rearranged. The existing laws stemming from the colonial era no longer represented the present-day dynamics and aspirations of Indian society. The existing laws have often been criticized for being outdated and not in tune with the present-day needs. The proposed Bharatiya Nyaya Sanhita seek to change the nature of law towards providing justice rather than punishment and would be a step forward to remove traces of colonial mindset. It was a mammoth task of drafting comprehensive amendments to the criminal laws and 4 years of intense discussions for making new laws that imbibe Indian thought process and the Indian soul. A comprehensive review of criminal justice system in our country was the need of the hour to bring it on par with the contemporary aspirations of the people of India. Well viewers, that's all I had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sansad TV. Goodbye for now from my side.